नमस्कार एंड वेलकम। तो जैसा हम सब जानते हैं, ये यूनिवर्सल प्राउटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन यूपीआईएफ का फोरम पे आज हम लोग हैं। और फेडरेशन ऑफ प्राउटिस्ट यूनिवर्सल आज आपको एक ओपन फोरम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिस्कशन के लिए आमंत्रित करता है। और आज का विषय है, जैसा कि आप सब लोगों के पास पहुंचा होगा, टू नर्चर ग्लोबल वेल बीइंग्स। आई मीन हाउ टू एड्रेस physical needs so that all will have increasing opportunities for intellectual and spiritual liberation। तो इस चर्चा का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाने की चुनौतियों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालना है जहां हर व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके। तो मेन जो मुद्दा है वो रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का है। The Earth's vast resources provide the foundation to meet the basic physical needs. However, challenges arise due to uneven distribution or irrational distribution। संसाधन वितरण और समानता की इक्विटेबिलिटी की जो बात है, पृथ्वी के विशाल संसाधन बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। And resources are enough for humans needs। हालांकि असमान वितरण, जिसको इरैशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसके कारण चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और हो रही हैं। आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं और भी बढ़ी जाती हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी को कम से कम भोजन, कपड़ा, आवास, स्वच्छ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यकताओं तक पहुंचने को, उतना तो उसके पास समृद्धि हो। आज समृद्ध लोग और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको हम कहते हैं अपने गांव की भाषा में, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खा खा के मर रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस वांछनीय नहीं है। जिसमें सरकारों, व्यवसायों और व्यवसायियों, व्यक्तियों को शामिल करके एक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जाए जो सभी की भलाई को प्राथमिकता दे सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो अस्तित्व बोध है, जो अस्थि है, उसके लिए फिजिकल जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उनकी गारंटी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक स्टार्टिंग रिमार्क्स अपना समाप्त करता हूँ। आप में से कोई भी इस टॉपिक पर अपने विचार देना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप हाथ रेज भी कर सकते हैं, अन्यथा अपना माइक को अनम्यूट करके आप आज के टॉपिक पे अपना मंतव्य रख सकते हैं। दिस इज अ ओपन फोरम डिस्कशन, बट सब्जेक्ट पे ही बात करेंगे तो अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं? जी नमस्कार दादा। वेरी मच दादाजी। आज के सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग प्रोत का स्टडी सर्कल शुरू कर रहे हैं। तो हम आपसे कुछ इस पे अपने विचार दीजिए दादा। थैंक यू सो मच। जी इसके लिए तो हम लोग को जो जो प्राइमरी फंडामेंटल नीड्स है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और भी चीज समय अनुकूल जो बढ़ते जाएगा, उसको हम लोग को सब प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। आज जाते हैं, किसी भोजन की ही बात करें, हम दाल रोटी की बात करें, हम तो मार्केट में जाते हैं, तो जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मानव संसाधन जो है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे खुशहाल किया जाए। तो मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज हमको शुद्ध नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य जो अस्तित्व है वही हो जाता है खतरे में। तो इसको ठीक करना पड़ेगा हमको कि भोजन को हम किस प्रकार से शुद्ध रखें।
तो मार्केट में तो देखते हैं कि बाहर से आता है सामान, सप्लाई किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा, मनमाने ढंग से महंगा महंगा सामान रखा जाता है, सही सामान नहीं रहता, शुद्ध सामान नहीं रहता। उसके लिए हम लोग को अपने स्तर पर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं बाबा के द्वारा सभी विधान दिया हुआ है, हमको छोटे छोटे जगह जहां पर जो सामान मिलता है, हम लोग को उसके स्तर पर, कोऑपरेटिव के स्तर पर जो ही बात उठती है, कोऑपरेटिव के स्तर पर हम लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा। बिना इसके हम कुछ कर नहीं सकते। वह कोऑपरेटिव में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं सबको कि अगर हम माइंड मेकअप कर ले, बना ले कि अपने अपने एरिया में जो सामान है, अब सिंपल हम देखते हैं कि कोई सामान देखिए कि अभी हम जा रहे हैं, गरम मसाले की बात करें, जीरा, गोल मरीच, यही सब चीज है, सौंफ वगैरह है, जमाइन वगैरह है, हम जाते हैं मार्केट में तो मनमाना ढंग से उसका दाम रखे हुआ है, सादा आदमी खरीदना मुश्किल हो आता है। तो यही सब चीज जो देख रहे हैं, आटा है, चावल है, बेसन है, सत्तू है, रंग बिरंग का चीज है। अगर छोटा छोटा आवश्यकताएं की चीजें जो है, हम बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं कर सके, हम जो सिंपल चीज है, जो रोजमर्रा की चीज है, उसको अपने स्तर पर अगर हम उसको कुछ आदमी का ग्रुप बनाकर ही सही, और समाज को पहले अपने ही स्तर, अपने ही समाज को मिलाकर फिर आगे अच्छा देंगे सामान, तो अच्छा दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। तो अभी सबसे बड़ा जरूरत है कि सही सामान हम थोड़ा सा, अगर हम ये उतना रिफाइंड जो होता है पैकेट में, डेवलप्ड पैकेट में नहीं दे सके, वो अलग बात है। हुआ वह झोला में ही मेरे सेंटर से ले जाऊं, वह हो सकता है यही हो शुरुआती दौर में। जी तो इससे क्या होगा कि हम ये अपने सामान को शुद्ध रख भी सकते हैं, और जहां तक होगा हम बहुत सस्ता नहीं हम कर सकते हैं, तो कम से कम मार्केट के दाम पर ही सही, और थोड़ा कभी कभी अधिक भी पड़ता है तो हम जानेंगे कि मान लिया कि सरसों का तेल ही है, अब मार्केट में हम रिफाइन खा रहे हैं जिससे मेरा गड़बड़ी हो रहा है, तो अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम थोड़ा सा महंगा ही हमको बनाने में लगता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हम रोजमर्रा के जीवन में मान लिया कि एक बार में सब्जी में लग रहा है, घर में लग रहा है 50 ग्राम अगर सरसों का तेल लग रहा है, या 100 ग्राम तेल लग रहा है, तो कोशिश करेंगे कि 75 ग्राम में भी काम चला ले, एक अच्छा चीज लेकर। और आजकल तो कह रहा है जीरो ऑयल कर रहा है, तो हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप जीरो ऑयल कर लीजिए, कम से कम है कि जो दाम आपको बढ़ रहा है शुद्ध चीज देने में, दाम अगर थोड़ा बढ़ भी रहा है कहीं पर, तो खपत जो है घटा दीजिए, तो उतना ही दाम में आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो बहुत जरूरत है कि हम इसको अपने भोजन को शुद्ध रखें, और मार्केट दाम पर ही सही उसको मुहैया करावे, जिससे क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, खुशहाली रहेगा सब कुछ। नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ से हम मार्केट से सामान लाते हैं, बीमार रहते हैं, और गाड़ी कमाई हम क्या हॉस्पिटल में देते हैं, डॉक्टर के पास जाकर देते हैं। ये सब क्या है कि हम बचेगा। साथ में क्या है कि यह करने के लिए भी हमको क्या होगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से जब काम करेंगे, तो साथ में क्या होगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री पॉलिसी सब दिया हुआ, उसमें लोग का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, हम लोग रोजगार जो लोकल स्तर पर उसका सृजन भी करेंगे। बहुत सारे उपाय सब बताए हुए हैं, बाबा के द्वारा बताया गया है, तो इससे बढ़ेंगे हम। तो क्या होगा कि एक तरफ से निर्भरता मेरा जो होगा, सो और साथ में साथ साथ चलाना पड़ेगा, ये तो हुआ मेरा, यह काम अलग है। और साथ में जो यह मानसिकता बना हुआ है कि हम दिन रात सवेरे से देखते हैं, हम तो शहर सब में देखते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, बड़े बड़े महानगर में देखते हैं कि एक किसी गार्जियन का बच्चा होता है, तो पिता का, वह
रात में ही क्या करता है, वो जाता है कमाने के लिए, तो सवेरे से निकलता है काम पर किसी बड़े शहर में, तो वहां से जाने में काम पर लगता है, फैक्ट्री में लगता है उसको 4 घंटा जाने में लगता है, और फिर 10 से 5 वहां काम करता है या 10 से 6 काम करता है, तो सवेरे निकल जाता है 5 बजे 6 बजे भोर में निकला हुआ ड्यूटी पकड़ने के लिए 6 बजे। अब फिर आता है वहां से वो व्यक्ति काम करके, तो आते आते 10 बजाता है। उसका छोटा बच्चा क्या करता है, वो केवल जाते वक्त में सोए हुए देखा था और आते वक्त में सोए हुए, बिछावन पर ही उसको बढ़ते हुए देखता है। उसको पूरा समय लग रहा है उसको क्या चीज में, तो अपना कमाने में पूरा लगा रहा है। तो ऐसा व्यवस्था अगर मेरा हो जाएगा, इस सब के माध्यम से लोकल में उसको रोजगार मिलेगा, तो क्या होगा कि यह जो समय बचेगा, तो यह जो लगा हुआ दिन रात रहता है बहुत आदमी को कि और चाहिए पैसे के चक्कर में रहता है, तो वह भी क्या होगा कि अगर इसके मानसिकता को हम जो है फिजिकल वर्ल्ड से हम अगर साइकिक वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाएंगे, तो एक संतुष्टि भी आएगी। कहा गया है कि गर धन गोधन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो इससे क्या होगा कि हम इधर जो जितना जरूरत उतने में काम में लगे रहेंगे, अब बाकी समय बचेगा तो अपने साइकिल डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लगाएंगे, तो मेरा जो लक्ष्य की प्राप्ति भी होती जाएगी। तो बहुत सारे बातें हैं, तो हमको सबसे पहला जड़ मूल है कि हमको जी दादा। कोऑपरेट शुरू करना पड़ेगा। आप कोऑपरेटिव शुरू करके अपने आप को इम्प्लीमेंट वहां देना पड़ेगा, और बाकी समय को हमको साइड में देना पड़ेगा स्पिरिचुअल साइकिल वर्ल्ड में, ताकि मेरा संतुष्टि भी आएगा। अब कहा गया सातु भक्तु दरिद्र जस आशा विशाला मनसी च प्रतुष्टे कोर्थमान कोर दरिद्र, हम्म। जब आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कोऑपरेटिव को हमको सशक्त करने की। इसके लिए पूरा जो होता है कमर, जब तक लोग आके चाहेगा कि कोई कर दे कल्याण में आके, यह संभव नहीं है। सब व्यवस्थाएं लोग देख चुका है, देख रहा है, इससे कहीं कुछ नहीं। जितना हो रहा है दिन अब बीत रहा है, उतना ही महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ यस रहा दादा, यस दादा, यस। यस। है। तो और विशेष क्या कहें, शॉर्ट में थैंक सब यू बात दादा, लोग बहुत बोले। बहुत धन्यवाद। You have touched the very core of the issue that प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इज फुल ऑफ इम्प्योर थिंग्स, एटलीस्ट हम जहाँ रहते हैं। द प्योर, सो वी हैव टू प्रोड्यूस अवर प्रोडक्ट्स, एंड द क्रक्स ऑफ द इशू इज कि जब तक लोकल लेवल पे लोकल जो रॉ मटेरियल होता है उसका जब हम फाइनल प्रोडक्ट जब तक नहीं बनाना शुरू करेंगे, जब तक हर चीज के लिए फॉर एवरीथिंग विल रन टूवर्ड सिटी, it is very difficult. But you rightly said कि because of the cooperative, we need to start this initiative, and there is no other alternative. So start with a small basis, which we are trying to start. So that is a very good thing. It will be. और one more important thing you told कि लोकल लोगों को जॉब मिलना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। वैश्विक कल्याण को पोषित करने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर, फॉर द नर्चरिंग ऑफ द ग्लोबल वेल बीइंग, भौतिक आवश्यकताओं को कैसे संबोधित किया जाए, आई मीन हाउ टू एड्रेस फिजिकल नीड्स of the people so that all get opportunity to grow mentally and spiritually as well. So this was the subject. May I request my Dada Madhusudan Dada has joined. I think he was busy, but still he has found time to join today. Dada Madhusudan ji, are you hearing me? I know you had a program in USA, Aaj, but still you have found some time. So thank you very much. If you can unmute and say a few words for us. Namaskar. Can you hear me okay? Yeah, right. Um, Actually, it's an interesting topic, but from a proudest point of view, it's impossible to do without establishing proud. Because under capitalism, poverty is guaranteed. It's a requirement. Poverty is really a requirement of capitalism. You can't even have capitalism without poverty.
It's a necessary, and they actually teach you this in economics class in university. That's why I learned it actually. In the Wharton School of Economics, they teach that. So we can talk about how to eliminate poverty and to guarantee basic necessities of life, but it's all theoretical unless under a capitalist system. In the proudest system, we guarantee the basic necessities of life constitutionally. Means you start with a premise and you build the economy around that. With capitalism, we say, okay, we'll satisfy the needs of the economy, and whatever is left we give out to the rest of the people. And so the whatever is left is very small amount, and people are left fighting over that. So it's and I really believe that once, if we had a proudest system, it would be very easy to do. You look at how much waste we have in our society, how much waste there is in the economy, how much huge disparity of wealth we have between the wealthy and the people who are living below basic standard of living. And it wouldn't take that much redistribution of the wealth. It would basically be redistributing unutilized wealth. And there would still be excess surplus, because even in Proud, Baba says that there's still going to be surplus wealth that will be distributed according to the needy, those people who are requiring that. So it's not like, we're not like communists where everybody's supposed to be equal. Well, actually, in communism, everybody's not equal either. But in theory, it's like that. So we don't say that everybody's supposed to be equal, but the disparities will be much less. And by reducing those disparities, we can ensure that nobody will have to suffer from lack of the basic necessities of life. Then the rest is based on what you want. The whole concept of the whole concept in capitalism, where your basic necessities of life are dependent on your labor, on your selling your labor. That doesn't exist in Proud. In Proud, our labor goes to the things that we like to do, because our basic necessities are guaranteed by the general by the economic unit, that is the cooperatives that we would all be members of, and we would get our income from the co-op. And so our labor actually would be more fulfilling, gratifying. We would work in doing things that we would enjoy doing, rather than having to force ourselves into jobs that we don't like in order to basically slave away to make money to basically have enough food to eat. That whole thing gets turned on its head in Proud. So to talk about it in capitalism is very useless, pretty much. I mean, there are three forces in society. One is cultural force, and then left two are the economic force and then political force. Now, the economic force and political force have their hand. They have come together and become the more powerful. And we know that power corrupts, and the more power corrupts you more. Or you can say the absolute power corrupts absolutely. So that is the situation today, and it's everywhere across the world. So Madhusudana rightly said that it is very difficult unless the Proud comes. इसके पहले विनोद दादा ने कहा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं. So we can start small initiatives. For example, cooperatives. Cooperatives में, because आज समाज में कोई चीजें शुद्ध नहीं मिलती हैं, there is no pure things available in society. So at least one segment of the people, they are ready to give you anything, they can pay anything शुद्ध चीजों के लिए, because वो देखते हैं, जैसा कि अभी दादा ने भी बताया, कि यदि शुद्ध चीज है, मान लीजिए तेल है, मसाला है, थोड़ा कम ही डालेंगे यदि महंगा है तो, लेकिन उसकी वजह से हम बीमार पड़ के अफराद पैसे मेरा बर्बाद तो नहीं होगा इन आवर मेडिकल ट्रीटमेंट.
सो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम कुछ तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रह सकते हैं, जब तक प्रभुत्व नहीं आएगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। नो, वी कैन डू मेनी थिंग्स। और उसके लिए और ऐसा करके हम इवन गवर्नमेंट्स की, मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देयर आर सो मेनी पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट। पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट्स बहुत माहिर है, बट इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए यू कैन फाइंड देयर पॉलिसीज, यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई दिस इज नॉट, ये सुविधाएं जो हैं, सॉरी, आम जन तक पहुंच क्यों नहीं रही हैं। सो समवेयर यू हैव टू रेज वॉइस, और आपके वॉइस रेज करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कृपया सामने आए, ये अपने ही लोग हैं। जब अपने लोगों में आप नहीं मुखर हो पाइएगा तो आप समाज में अपनी बातों को कैसे रखिएगा। सो डोंट माइंड, बट इसीलिए ओपन फोरम रखा गया है टू लेट अस लर्न। तो मैं कह रहा था कि आज यदि गवर्नमेंट की ईमानदारी से इच्छा हो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो कर सकती है। बिकॉज सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। यदि हम सबको मिला करके बुला करके यदि इस बात को पूछें कि एज अ प्राइम मिनिस्टर दैट सी आई वांट कि हमारे हर व्यक्ति को बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है सोल्यूशन नहीं आएगा? सोल्यूशन अवश्य आएगा। ऐसा नहीं कि हम ही बुद्धिमान हैं, प्रौद्ध पढ़ने और लोगों को समझ में, सबके समझ में आ रहा है लेकिन इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल होना चाहिए। unless there is a political will to solve this, and देखिए पॉलिटिक्स इज फॉर द सर्विस, जबकि पॉलिटिक्स हैज बिकम बिजनेस टुडे। और ये जब तक पॉलिटिक्स को सर्विस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक वो आम आदमी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। हाँ, मैं कह रहा था, तो इन लोगों को बुला करके सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भरे पड़े हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भरे पड़े हैं, शिक्षा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स में भरे पड़े हैं। क्या इनको इनवाइट करके इन प्रॉब्लम्स को जो हम, जिसके लिए आज हम और आप बैठे हुए हैं, सॉल्व नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट वी शुड स्टार्ट रेजिंग द वॉइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ द गवर्नमेंट सेट्स इट्स प्रियोरिटी कि हमको कृषि को ऊपर लाना ही है, बिकॉज मनुष्य की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिसको हमारे यहाँ प्रभुत्व में पीपल्स इकोनॉमी कहते हैं, तो उस संदर्भ में मनुष्य की जितनी भी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी की जो हम बात करते हैं, ये पीपल्स इकोनॉमी से संबंधित है। और ये इस पर आज की किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं जाता है। हाँ उदय दादा, आप बोल सकते हैं। हाँ, मेरा एक यही मानना है दादा, एक जी मेरे विचार से। जी दादा। हमारे जो भारतवर्ष में जो है 44 समाज है, जी जी जी। और 44 समाज में से हर भुक्ति में कम से कम 10 ठो जो प्रोटिस्ट होना चाहिए। इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों से संपन्न होना चाहिए, और एक्टिविटी होना चाहिए। जी जी जी। और दूसरी बात है कि ये सब भुक्ति प्रधान से, भुक्ति कमेटी से जो 10 मेंबर, 12 मेंबर हो, 15 हो, 10 से तो ऊपर ही होना चाहिए। जी जी जी। 40 समाज में से अगर एक डेट, एक समय, और जैसे हम लोग जो दिल्ली में जो माने किए थे हम लोग, जंतर मंतर पे, जी जी जी। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे 44 समाज से आना चाहिए, हर भुक्ति कमेटी से। जी दादा, जी दादा, एग्री एग्री। और हम लोगों का जो एक तरह से जो आवाज जो उठेगा, तो हमको लगता है कि पूरे इंडिया का पार्लियामेंट जो है उसको भी हिला देंगे हम। वेरी गुड, यही आयल कोरे दादा का ही कंसर्न था, वो भी ऐसा ही कुछ बोलना चाह और, रहे थे, बट वो थोड़ा और दूसरे दादा, मोड में चले एक गए। जी, सेकंड दादा, बहुत सही। और एक सेकंड दादा, और जी दादा, बोलिए दादा, आप बोलिए, बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे जो कि, हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे 44 समाज है, और हमारे जो आनंद मार्गी जितने भी हैं, सन्यासी, सन्यासी दीदी, मार्गी दादा, मार्गी दीदी, हर समाज के ठीक जो बंधेगा पांचों, तो बहुत उसमें ताकत होगा दादा। हम्म।
क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? ये दो एकदम संभव है दादा। आप जहां एक, भी हैं वहां पे इतना काम करें कि लोग प्रभावित हों और आपसे जरूर जुड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस पे वही कोरे दादा का भी कंसर्न था कि लेट अस वर्क, जहां भी हैं हम बाबा का काम करने आए हैं ना, वहीं पे हम परम पुरुष का काम करेंगे। जो हमारे बस में नहीं है उसकी बात ना करके जो हमारे आज बस में है उतना तो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका भी, कि 44 समाज में कम से कम हर भुक्ति में यदि 10 आदमी हों तो हम जब एक साथ उठेंगे कुछ भी बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। आप, आई एग्री विथ यू। जैसे हम सब जानते हैं कि आज भी कम से कम 60-65% पॉपुलेशन जो है वो हमारी गांव में रहती है। मतलब गांव में रहने का मतलब है कि वो एग्रीकल्चर पर आधारित है, उनका जीवन कृषि पर ही आधारित है, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, या उसमें काम करने वाले मजदूर हो। और मोस्टली जो जो इंडस्ट्रीज हैं, व्हाटएवर जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं। मैं आपको जस्ट अभी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कलकत्ता गया था, किसी ने वो चना, मतलब जो चना भूनते हैं ना, वो भून करके उसमें केवल क्या बोलते हैं, काला नमक डाल करके, और तो कुछ दिखा नहीं। वो इतना टेस्टी था। उसमें मैंने प्राइस देखा 500 ग्राम का, तो 240 रुपीज। आई मीन आप कल्पना करिए कि वही, मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब जहां रॉ मटेरियल है वहीं बने, और यही प्रोत भी कहता है। तो ये जो अननेसेसरी की चीजें हमसे सस्ते दाम पर लेकर करके, दोज कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो 60-65% जो जनसंख्या हमारी कृषि पर आधारित है, उनका जीवन काफी आसान हो सकता है। दिस इज अ रिलेटिव टर्म। तो ये जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये जो बेसिक नीड्स की जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं पीपल्स इकोनॉमी के अंदर। और उस पे आज कोई भी सरकार उसको तवज्जो नहीं दे रही है। इसका उदाहरण यदि मांगिएगा तो आप बजट देख लीजिए, कृषि पे जो बजट है, जिसपे कि कितनी बड़ी आबादी है उस पे आधारित है, लेकिन कृषि बजट आप देखिएगा 15 साल में उसे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सो दिस स्पीक्स अबाउट द, कहते हैं ना कि पॉलिटिकल विल ही नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि अभी नेता में, आई मीन लीडर्स में और पॉलिटिशियंस में बहुत अंतर होता है। पॉलिटिशियंस हैव ओनली सोल मोटो कि हम अगला इलेक्शन कैसे जीतें, वेयर एज अ लीडर थिंक्स अबाउट हाउ, कैसे हम अपने लोगों की स्थिति को सुधारें। तो ये दो फंडामेंटल चीजें हैं, इनको समझना होगा, उनको सुन I लेते hope हैं। I'm heard. Okay. हाँ, यस, यू आर हर्ड, यू आर प्रिफरेबली हर्ड। uh, दो तीन चीजें बहुत सभी speakers have pointed out very valid reasons, valid conditions that we are prevailing now. But certain things are very amazing, no? See, today, 80 crore people in India are on the what you call ration. राशन पे डिपेंडेंट है, हाँ। Ration. After 75 years of independence, we have 75, 80% of the people practically on the stage of receiving a kind of a, see, that means डोल आउट्स। one thing becomes very clear. Production is there, but distribution is not. So they are being reduced to being begging kind of stuff. Kind of a dignity of human, dignity pura citizens ka has been why work cannot be created. Work cannot be created so that, or let us say, why distribution is not rational. There is no rational distribution. So while there is production is there. That's one point. Second issue that makes a very amazing thing is that Yuval Noah Harari says that human society has got so many challenges in front of it. That means a lot of work is there to be done. Lot of work is there to be done in health, work is there to be done in what you call food and shelter and education and security. All these things are there. But on the other hand, people say that there is no employment. See, on the one side, work is abundant, but at the same time, when the work is abundant, why there should be unemployment? That means the hands that can work are not what you call not rationally integrated with
the requirement of our society. So on the one side you have unemployment, on the one side you have requirement of people to work for doing so many things. Education is now lacking, and health is lacking, education is lacking, food is lacking, poverty is there. All these things. So the whole atmosphere is like this. The scientists and technologists say that we have possibility of production is not an issue. The issue, as repeatedly Rajendra Prasad Dada has been pointing out, it is a lack of the political will to reorganize the society, reorganize the economy in a rational way, so that people have employment, but at the same time decent work, and at the same time decent life. So that is not being arranged. Their concentration of what you call this economic power, or concentration of wealth, or what you call profits, are going to the top 1% or less than 0.1%. So they are increasing while the talk is going on about the crisis. At the same time, they are very comfortable about, the leaders are very comfortable about allowing the concentration of wealth in the hands of very few people continuously. And do they merit? No, it's not based on merit. It's only based on nepotism, favoritism, corruption, commission. All these things are there. So the immorality of the ruling class. Let me be very, very clear. Let us be very. It is the dishonesty and immorality of the ruling class today that is responsible for the situation, where people are on the one side are hungry, and on the one side there are godowns are full, and on the one side there is no equitable distribution. So distribution has become an issue now, prolong the production. And distribution is possible only, as you said, political will is required, and we have to raise our voice. And organizing the samajas so that they become self-sufficient. In fact, one of the, when it comes to food actually, the definition of proud is that agriculture sector comprises the agri inputs as well as the agro processing industries. Agro processing industry and agri units and also agriculture. All the three are considered as one unit, wherein the agri inputs will be controlled or produced, manufactured, distributed by the farmers' cooperatives. And also agro processing industry will be entirely in the hands of the farming community. And the shocking thing about the whole thing is that the agri input companies make huge profits. They declare, say, fertilizer factory companies declare huge profits about our seed manufacture, seeds production or what is distribution industry. And agro processing, you have Ashirwad, packaging and all these things. Those companies also tell about huge profits. While the farmers who really produce the grains on the soil, they are in distress. The people who are working on the field, working on the land, are in distress, while the people who supply the inputs are enjoying the cake. And also the agro processing industry is also enjoying the cake, marketing and whatever. So very little is going to the share of the farmer on account of this. So we have to redefine agro processing industries as part of agriculture sector, and also agri inputs manufacture and supply also should be considered as a part of the agri, and it should be entirely confined to the management by the farmers cooperatives, so that are not the capitalists. Then only there will be what you call production and a proper distribution possible. This is what I feel. The real struggle should be at the ground level. That is the farming community. The farmers' cooperatives and cooperativization of farming will only solve the problem with regard to food. Okay, basic minimum requirement. Secondly, if you go to nowadays, technology is going leaps and bounds with the help of artificial intelligence and all these things. Now, education is one sector which is going to have a huge benefit or a huge leverage because of the
this artificial intelligence. The what do you call the Microsoft Nadella has been speaking about that we'll be able to provide a private tutor for every student on earth. That is possibility. That is a possibility. A one-to-one kind of a private tutor for everybody is possible because of the artificial intelligence. And now it will become education can be distributed, quality education that too. Quality education can be distributed and available, accessed by the students anywhere, everywhere, anytime. So it is something anytime, anywhere education. Now that is possible. There's nothing like classroom, only in the classroom you'll be able to get the education. Not like. And that too wherein there are 40, 50 students and one teacher. But here, of course, the teachers also, this will serve as assistant to teacher also. Teachers also will be empowered in teaching, and also students will be empowered in learning. So this is going to be a huge advantage in the next 2 or 3 years. The cost of education is going to come to almost marginal cost or zero cost. In fact, we have been talking about one concept now, zero marginal cost economy. So we are slowly moving towards zero marginal cost economy because of the changes in technology, especially what do you call this machine learning and also artificial intelligence, ChatGPT changes that are happening on a weekly basis. On a weekly basis, we are seeing changes happening in the sector. And people are predicting that in a matter of 3 to 4 years, there will be a huge disruption of all the sectors on account of these technologies. And where are the leadership which will going to allow the benefits of this production to be distributed? Again, politicians, they are trying to corner everything. And they are trying to the continuous process of disparity in income of the majority of the population and very few favored percentage of people is rapidly accelerating and almost on a basis. In fact, democracy has been subverted. Democracy has been been converted into a kind of electoral dictatorship. A kind of what we have now is some kind of electoral dictatorship. So elections will be there, but dictatorship also will be there. So this is the kind of situation we are having. Right. And I agree with most of the speakers that Prout is neglected. In fact, last 3 days, we have a Shivir going on in Hyderabad. I'm attending 3-day Shivir is there, Yoga Shivir is there. And where only, what is discussed is only spiritual philosophy. When it comes to focusing attention on Proud study circles, UPSF, Food Student Federation, there is not much of enthusiasm. Many of our Margis, they are concerned with their own liberation. Atma Mokshardam, that is the only thing that they believe in. They do not have time for Jagat Hitayacha. This is a very many have, I think, already observed here that not many Margis do not care for the social philosophy. Yeah, many people. बहुत लोग बोल रहे थे. I will go to the extent of kind of saying that today I was telling one of my friend this thing, like spirituality or talking only about spirituality. I said, spiritualists are people who only talk about spirituality, nothing else, are only selfish people. They only want to have their personal liberation and this thing. They are not bothered about society. Society is in a very dire need of some leadership, proudest leadership. But the proudest leadership is nowhere to be seen. I'm happy that I'm telling you, Rajendra Prasad ji, आपने जो initiative लिया है about proud study circle. हमने नहीं लिया है, PU ने लिया है दादा. Yeah. So, but anyway, you are the connecting, I think. Yeah, So, that's okay. I would like to be part of it. We would like to have a daily conversation. Yes. Daily we'll have half an hour, 40 minutes, or 1 hour. We'll have an open window for discussion on proud and current affairs and all that. Thank you, Dada. Yeah, you are right. Yeah, this will continue. Okay.
So this is what is the No, challenge is. you have raised wonderful points. I mean, at least the Only- way you have defined agrico, and agriculture, and I really liked it. The And two one are more thing, profitable, and one is in a soup. uh, Yeah. Thank you. I do not know how it will pan out, but I am also I have been offering that I am prepared to mentor the cooperative. Yeah, People yeah. want The to start cooperative. cooperative. We were In village. searching you. You are not available. No, we were searching you. The cooperative team is formed, and I'll be always with you. And your guidance is very much Of course, required. I am actually a kind of a, I'm actually misleading all you people. For last 5 to 6 months, I have not been paying attention to what is Anyway, happening. from today onward, you will be with us. So thank you very much. And no holiday now. No holiday. Okay. I Thank want you so much, you Dada. people. Namaskar. Namaskar. May I request Acharya Dilip Dada to few words, Dada, so that आप लोगों का बहुत important points रहता है. Yes, Dada. नमस्कार sir. Namaskar, Dada. No, namaskar. Today's topic is global physical well-being will lead to psychic and spiritual development. It's a of that kind of topic we have. Yes, Dada. Now let us see those who have fulfilled their physical needs. Are they spiritual? I'm just going. I'm giving a thought. Yeah. We are thinking that if we fulfill the minimum requirement of the people of 5 fundamental requirements like food, clothing, housing, education, health, will that really lead to spiritual development? The question is certainly because the presidency, suppose the whole of Europe, they are not wanting any physical need. Yes. They have surplus. They have surplus. Likewise, if you see America, Canada, and those kind of countries, they are very good in respect of physical well-being. So there is something more which is needed apart from these 5 fundamentals requirements. Yes. Although, for want of these things, there may be some people, they may not have an opportunity to divert their attention towards this noble cause of spiritual well-being. That is one thing which we can think of. The basic thing is the kind of dogmatic belief in which we are living, and all the religions are full of these dogmatic perceptions, and they are so much bound with those dogmatic things. Their spiritual well-being is just impossible. So the necessity is, apart from these 5 fundamentals, we need to educate in such a way that their urge for spirituality is also awakened. Right. So that's a it's a requirement. Even in India, those who have no problem. Suppose I mean, Reddy Dada was talking about 80% people, they have still living in a food supplied by the government, but 20% are there, no? 20, 25, 30% people are still there. Their physical needs have been fulfilled, but are they pursuing spiritual life? The question, the answer is no. And even if they are pursuing some spiritual life, is it that dogmatic. really is it really a spiritualistic thought they are pursuing? The answer is no. We have to work on many fronts at a time. Rightly said. Can I say one word? Right, sir. Right. See, in one of our scholars, Proud scholars, has said, Proud he is defined in a way. See, he says Proud is equal opportunity legislation. Proud is equal opportunity legislation. That means, for example, when the Proud says minimum guarantee should be enshrined in the Constitution. So he is mandating the society, mandating the state, mandating the society
that it is your responsibility to see that everybody is has an equal opportunity. See, Opportunity. here the word is equal opportunity. It is not about equal, see, giving equally everything equally and all. No, equal opportunity legislation. So we recognize merit. We also recognize necessity. Necessity for every, for universal basic requirements or needs and all those things, and that gives an opportunity for them and to grow in what you call our in knowledge. I think I just wanted to say one I got sentence. your point. Got your point. Yes. Equal opportunity legislation. The proud design is Yeah. to see that every human being on earth, he gets an opportunity to grow. Right, Dada. We understood. Yeah. Yes. But Proud also says that we have to ensure purchasing capacity of each person, so that he is in a position to maintain his physical well-being. Yeah. Yeah. So that is a kind of guarantee which Prout is stating. It's not only question for opportunity; it's a guarantee also. And to the in the sector of education as well as health, this guarantee has to be given. It's not question of only opportunity. So उसकी क्रय क्षमता इतनी इतनी हो कि वो अपने इन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ये प्रवृत्ति का हमारा लक्ष्य है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जहां पर ये सारी जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं या भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनका पूर्ण हो जाने के बाद भी लोग अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं देते, या जिस अध्यात्म की तरफ वो अपना ध्यान देते हैं या जो वो समझते हैं कि जिस वो अध्यात्म का रास्ता है, वास्तव में वो अध्यात्म का रास्ता नहीं है, वो जड़ भावना से ग्रसित है। अध्यात्म का पथ बहुत आसान पथ नहीं होता, इसमें शॉर्टकट नहीं होते। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन लोगों को वही ज्यादा पसंद है कि कोई हमको 1000-2000 रुपए भी ले ले और भगवान जी का दर्शन करा दे और मैं मेरा जीवन धन्य हो जाए। इस तरह की जो मानसिकता लेकर के लोग हैं, तो अब उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही। ऐसा वो उस अध्यात्म के उस अनुभूति को नहीं पा पाएंगे। तो उसके लिए आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के खुद का बलिदान चाहिए, खुद के अंदर वो लालसा जगनी चाहिए कि मुझे उस चीज का दर्शन करना है। वो किसी फिजिकल या जो भौतिक संपदा है उसके द्वारा वो नहीं मिलती। वो संपदा हमारे अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है। वो हमारे अंदर प्रेरणा और प्रेरणा, जो भी वो शब्द हम इसका इस्तेमाल करें, वो खुद को पैदा करना है उस रास्ते पर आगे चलने के लिए। हाँ, यदि किसी के पास में, मतलब वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारे संत महात्मा अभी हुए हैं जिनके पास में ये पांचों आवश्यकताएं पूरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अध्यात्म के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गए। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कबीर। कबीर के पास कोई महल नहीं था, उनके पास में कोई बहुत ज्यादा गारंटी नहीं थी कि उनको कल का खाना मिलेगा। जो कंबल बुनते थे उसी को बेच करके उनका खाना होता था। हाँ, नहीं, लेकिन उनके अंदर अर्थ था। जी। तो वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वो आदमी में कैसे पैदा करें। जी। क्या सब में पैदा हो सकती है? मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकती। मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए एक जन्म शायद पूरा ना हो, कई जन्म को लेना पड़ जाए। लेकिन यदि वो उसके अंदर वो बीज पैदा डाल दिया जाए तो एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं, तीसरा जन्म में शायद उसकी संभावना हो जाएगी। तो हालांकि मैं एक सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, उसमें हो सकता है कुछ लोगों का मतभेद भी हो जाए, कि बाबा कहते हैं कि 5% लोग भी यदि आध्यात्मिक हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मतलब 95% लोग कभी आध्यात्मिक नहीं होंगे। एक समाज के अंदर 5% बाबा ने बोला बहुत बड़ी बात हो गई। और
ये जो दूसरे जो हमारा स्तर है, जो साइकिक स्तर पर जो लोग हैं, या उसको अलग तरह से जो तामसिक, राजसिक और सात्विक लोग की जब हम चर्चा करते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि सात्विक लोगों की संख्या 5% भी बहुत है। राजसिक लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, वो मान लीजिए 80% भी है और 20% में तामसिक लोग हैं, तब भी समाज का संतुलन बना रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों, क्या है कि यूरोप और इस तरह के जो विकसित देश हैं, जहां पर बाबा कहते हैं कि जो सात्विक लोगों की संख्या बहुत कम है, केवल राजसिक लोग बहुत ज्यादा हैं, जी तामसिक लोगों की संख्या कम है। इसलिए वो डिसबैलेंस है कि वो अध्यात्म के रास्ते पर नहीं, और ये जो जड़ विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनके पास में ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग बहुत कम हैं। शायद जी। ऐसा कुछ मैं सुनने में आया कि 1% से भी के करीब हाँ लोग हाँ हैं, हाँ हाँ, कहीं ऐसा ये कुछ। सुनी बात है जी। हाँ, वही मैं भी वही सुनी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो कहीं जी जी, कहीं कहीं ऐसा नहीं बोले कि लिखा। कहाँ लिखा हुआ है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ लेकिन कुछ ऐसा नहीं चीजें हैं जो लिखा नहीं है। जा सकता। हाँ, तो जो मैंने सुना है, जी दादा। बाबा ये कहते हैं कि भारतवर्ष में ये प्रतिशत ज्यादा है, जी अध्यात्म को जानने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ राजसिक लोग कम है, तामसिक लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो जी। उन तामसिक लोगों को की संख्या कैसे हम आगे, तामसिक लोग भी अभाव में जीते हैं, तो वो अभाव की यदि पूर्ति कर दिया जाए, मतलब वो तामसिक लोगों को राजसिक क्षेत्र में लेकर के आ जाए, तो हमारा देश एक विकसित देश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सभी को ला सकते हैं, लेकिन हम्म। कम से कम 70-80% लोग राजसिक क्षेत्र में भी आ जाएं, जो कि प्रभुत्व के द्वारा संभव है, अदरवाइज वो संभव नहीं है। तब वो समाज एक संतुलित समाज होगा, लोग आगे अच्छी तरह से जिएंगे, और ये जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, तो समाज में वैसे भी शांति बनी रहेगी, संतुलन बना रहेगा। यही दादा मुझे कहना अच्छा मैथमेटिक्स दादा, आई आई लाइक इट। बहुत प्यारा है मैथमेटिक्स है। इधर से कुछ लोगों को इधर यदि कन्वर्ट कर सके देन विल बी बेटर देन द यूरोप। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मिले, जैसे कि अभी दिलीप दादा ने बोला कि 5% लोग का, तो हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है भारत में, महाभारत ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 5% लोग यदि सात्विक हो जाएं एंड स्पिरिचुअल मॉरलिस्ट हो जाएं देन यू कैन डू एनीथिंग। और इसके बाद हमारे रेड्डी दादा ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई कि एग्री एग्री और एग्रो जो है काफी प्रॉफिट में है, एंड एग्रीकल्चर इज इन लॉस। सो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। यदि सबको, यदि एक अम्ब्रेला एक आदमी को दे दिया जाए, आई मीन एक ग्रुप को दे दिया जाए मैनेज करने के लिए, दैट सिचुएशन कैन इम्प्रूव। और मधुसूदन दादा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि पॉवर्टी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। In basic philosophy, idea and ideology, that is cosmic brotherhood, the propounder of Prout says, in this socio-economic setup, people are at full liberty in the spiritual and mental spheres. This is possible because the spiritual and psychic entities for which people can aspire are themselves unlimited, and the extent of possession in this sphere does not hamper the progress of others in their quests. But the supply in the physical sphere is limited, and hence any effort for disproportionate or unrestricted acquisition of the physical objects has every possibility of creating a vast majority of have-nots, and thus hampering the spiritual, mental, and psychological growth of the larger majority. So, while dealing with the problem of the individual liberty, it must be kept in view that the individual liberty in the physical sphere must not be allowed to cross a limit whereat it is instrumental in hampering the development of the complete personality of human beings, and at the same time must not be so drastically curtailed that the spiritual, mental,
and physical growth of a human being are hampered. Thus, the social philosophy of socio-economic philosophy, Prout, advocates the development of the integrated personality of the individual and also the establishment of the world fraternity, including inculcating in human psychology a cosmic sentiment. The Prout advocates progressive utilization of mundane and supramundane factors of the cosmos. The society needs a stir for life, vigor and progress, and for this, we advocate the progressive utilization theory, Prout, meaning thereby progressive utilization of all factors. Those who support this principle may be termed Proutist. The principles of Prout depends upon the following fundamental factors. First, no individual should be allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the collective body. That is, constitution provision should be such. Second, there should be maximum utilization and rational distribution of all mundane, supramundane and spiritual potentialities of the universe. That is, basic minimum must be guaranteed through constitution. Again here. Third, there should be maximum utilization of the physical, metaphysical, spiritual potentialities of the unit and collective bodies of human society. So that all resources must be utilized, not misutilized and wasted rationally, and therefore all must be participating in the producing of wealth for the country or the samaj. Similarly, the fourth one is there should be a proper adjustment among the physical, metaphysical, mundane, supramundane and spiritual utilizations. Means the people should know the aim of life, human life, to achieve infinite happiness, not in material world, but mental and spiritual world, so that others' freedom is not hampered, others' progress is not throttled. And the fifth one, the final one, is the method of utilization should vary in accordance with the change in time, space and person. And the utilization should be of a progressive nature. For example, utilize maximum technology and reduce the working hours of people to enjoy a more mental and spiritual world, the world of aesthetic science, supra-aesthetic science, Nandan Vigyan, Mohan Vigyan. Hence, ours is a progressive utilization theory, Prout. So with these all factors, यदि किन्हीं को कुछ नहीं कहना है, then I think we should close the session here. Thank you very much, and let us do a minute of meditation before we close the session as per our protocol. Thank you.